dimension of physical quantities. Dimension of physical quantity in which the seven fundamental base quantity, या फिर हम कह सकते हैं सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि 7 नंबर की बेस क्वांटिटीज है इन फिजिक्स. दैट इज द फर्स्ट मास, लेंथ, 3 टाइम, 4 टेम्परेचर, 5th luminous intensity, 6 electric current, 7th amount of substance. There are all the 7 physical quantity are used in physics. ये 7 बेस क्वांटिटी है जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, जिसमें पहला मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये बेस क्वांटिटीज है. The dimension of physical quantity have a more than rules. It is a simple rule. बिल्कुल बच्चे टाइप रूल है. The rule of dimension of physical quantity. First is a physical quantity. A physical quantity can be described by its dimension. यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसकी डायमेंशन से अपन उसको बता सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट लेंथ, इट इज द डायमेंशन इज मीटर. जनरली अपन लेंथ को किस में लेते हैं? मीटर में. दूसरी इज मास, द डायमेंशन इज किलोग्राम. थर्ड इज टाइम, द डायमेंशन इज सेकंड. फोर्थ इज टेम्परेचर, द डायमेंशन इज केल्विन. टेम्परेचर यानी कि ताप को अपन केल्विन मिलेंगे, ना कि डिग्री सेंटीग्रेड, ना ही फ़ारेनहाइट मिलेंगे. ओनली केल्विन, बिकॉज इज द 7 बेस क्वांटिटी यूज इन SI यूनिट. फर्स्ट इज luminous intensity used in candela of the dimension 7. Electric current, the dimension is ampere. इलेक्ट्रिकल करंट को अपन एम्पियर में शो कराएंगे. एंड 7 इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको डिनोट करते हैं अपन मोल से. These are the 7 base dimension: मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, कैंडला, एम्पियर एंड मोल. बिल्कुल सिंपल क्वांटिटी है. The second rule of the physical quantity: a physical quantity represented by derived unit. A physical quantity represented by derived unit. This derived unit
expressed in the seven fundamental quantities। मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट बाय ड्राइव यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी की अपनी एक ड्राइव यूनिट होती है, उस ड्राइव यूनिट को अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं सेवन फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज़ में, जो कि सेवन फंडामेंटल बेस क्वांटिटी आपको पढ़ा दिया गया है, जिसमें आता है अपना मास, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, लुमिनस कैंडल्स एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। उसमें अपन बेस क्वांटिटीज़ को क्या डिस्क्राइब करेंगे। दिस सेवन fundamental quantities is denoted by ब्रैकेट, यानी दोनों तरफ से एक ब्रैकेट लगाएंगे। इस द बिग ब्रैकेट कह सकते हैं आप इसको, और इस ब्रैकेट को अपन बोलेंगे द डायमेंशन ऑफ। इन अ फिजिक्स लैंग्वेज द डायमेंशन ऑफ इज नोन एज अ ब्रैकेट। द डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ की डायमेंशन उसी ब्रैकेट में, लेंथ की डायमेंशन को डालना है एल। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, द डायमेंशन ऑफ मास ब्रैकेट में एम, द डायमेंशन ऑफ टाइम उसको भी इसी ब्रैकेट में डालना है। ये फिजिक्स में शो करवाने के लिए द ब्रैकेट यूज किया जाता है, डायमेंशन यूज किया जाता है। टेम्परेचर, द डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, द डायमेंशन ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी कैंडला, उसको सी टी से रिप्रेजेंट करेंगे इन द ब्रैकेट। एंड द डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, उसको ब्रैकेट में अपन मोल से डिनोट करेंगे। द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको अपन एम्पियर से ब्रैकेट में डिनोट करेंगे। ये सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी को डायमेंशन ऑफ में रिप्रेजेंट किया गया है, और इसी से अपन यूनिट ड्राइव करेंगे। इसमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में शो करते हैं। ये बिल्कुल क्लास नोट्स हैं 11th के फिजिक्स के, आप इसे कॉपी में भी या अपने रजिस्टर नोटबुक में भी आसानी से लिख सकते हैं। थर्ड रूल इज ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज can be written in the term of a physical quantity can be written in term of m, the dimension of m, the dimension of l, the dimension of t। That is a थ्री क्वांटिटीज में इसको लिखना है एम एल टी की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। इसमें मास तो ऑलरेडी बेस क्वांटिटीज है, बट द एक्सेलरेशन इज नॉट अ बेस क्वांटिटी, इज कन्वर्टेड इनटू द बेस क्वांटिटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
The mass is denoted by the dimension of m. The meter is denoted by the dimension of L. The second is denoted by the dimension of T. So the formula is m L T minus 2. The dimension of force वो होता है m L T minus 2. इसी प्रकार अपन ऑल द फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं इन द बिल्कुल सिंपल बेस में. और all the formula have a three written in the three terms m L T. So force have a one dimension in mass, one dimension in length, and minus two dimension in time. This is a one dimension mass, one dimension length, and minus two dimension in time. This is a dimension of physical quantity of force, is denoted by the MLT form. Dimension of the physical quantity in which they draw the dimension formula and dimension equation. चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा. The dimension formula and dimension equation. A physical quantity is represent in the dimension is called the dimension formula. A physical quantity is represent in the dimension is called the dimension formula. We draw the dimension formula of force. The formula of force. A physical quantity is represented in the dimension is called the dimension formula. The formula of force, dimension of m, dimension of L, dimension of T minus 2 is the dimension formula. And the next drive the dimension equation. The dimension formula represented quantity is also written in the dimension of is in the dimension of the dimension formula represented quantity is also written in the dimension of the force in the dimension of is equal to the dimension of m, dimension of L, dimension of T. The MLT minus 2 is the dimension formula. And all the equation are included the dimension of force. Is this the dimension equation? यानी कि अपन जो force के लिए है उसको भी अपन the dimension of bracket में लिख देंगे.
और जो उसका जो फॉर्मूला है MLT उसको भी अपन ब्रैकेट में लिख देंगे। जो MLT है वो तो डायमेंशन फॉर्मूला है और फोर्स के साथ इंक्लूड होने पे वो डायमेंशन इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो F also included and the next topic is checking the dimension consistency of equation. Checking the dimensional consistency of equation, इसको अपन बोल सकते हैं the principle of homogeneity of dimension equation. Checking the dimensional consistency of equation. The magnitude the magnitude of physical quantity, the magnitude of physical quantity may be add or subtract from one another only if they have the same dimension. If they have same dimension. The magnitude of physical quantity may be add or subtract from one another only if is the same dimension. This principle is called the principle of homogeneity of dimension. This principle is called the homogeneity of dimension. This principle of homogeneity of dimension, that is the LHS RHS of the dimension of physical quantity are equal. यानी कि LHS में जो भी अपनी फिजिकल क्वांटिटी है और RHS में जो भी अपनी फिजिकल क्वांटिटी है उन दोनों को जो नेट ड्राइव क्वांटिटी वो सेम आनी चाहिए। इसे अपन बोलेंगे द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, यानी कि LHS और RHS किसमें होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन में। फॉर एग्जाम्पल take a equation x is equal to x naught plus vt plus half at square. That is the x is the LHS and the whole equation of the right hand side is RHS. Let's start. X the dimension of L, so there is the RHS value, and the x naught is also dimension of L, and the v into t, and velocity into time is equal to meter per second into second. That's also drive in the dimension of L because the seconds and 10 second cancel out हो जाएगा. तो dimension of L upon dimension of T into dimension of T, dimension T से dimension T cancel out होगा dimension of L, and the next is half at square. The half is not included in the dimension, and the A into T square, the meter per second square into second square. That is the dimension of L, dimension of T square, dimension of T square. The dimension of T square, dimension T square is cancel out the dimension of L. That is the L, L, L. The and is equal to the
LHS L. So we can say, so the equation, so each term in the right hand side, so each term in the right hand side is equal to the is equal to left hand side. So each term in the right hand side is equal to the left hand side. This equation is homogeneity of dimension. Yeah, this equation is homogeneity. This equation is homogeneity. Subscribe the channel now.